सुप्रभात. श्री परमरहस्य वाचन अध्याय 16वा श्लोक क्रमांक 7 ओवी क्रमांक 41. श्री गणेशाय नमः. श्री गुरुभ्यो नमः. श्री सरस्वते नमः. सद्यो जात मुखोत्पत्रो रेणुकः परिकीर्तिकः तन्नमरेवन सिद्ध सूत्रम पंडवित्यपि. जी सांगितले मुखे पाच, सद्योजात वामदेव अघोर साच, तत्पुरुष ईशान त्यातच उद्भवले आचार्य ग. सद्योजात पूर्व मुख, वामदेव दक्षिण देख, अघोर पश्चिम उत्तर, तत्पुरुष मुख ईशान ते मध्ये की. सद्योजात मुखा पासव, उद्भवला रेणुक गुर वाव, नामे रेवन सिद्ध देव पडविडी सूत्र करता. गुरोरेवन सिद्धस्य कोलीपाक पुरोत्तमे, सोमेश लिंग जनन मासवः कदलीपुरे. वीर धर्म प्रातिलपक प्रसिद्ध, नामे श्री गुरु रेवन सिद्ध, कोल्लीपाक नगर भीतरी शुद्ध, सोमेश लिंगी उद्भवले. तेथून निघाले सत्वर वना, गुरुत्व अधिकाराचे ज्ञाना, उपदेशावया मूर्तीजना, वान केला आश्रमी. तेने आपले सिंहासन, रंभापुरी येथे स्थापन, वीरशैव धर्म प्रगट होन, शिक्षा करी धर्म भ्रष्टा. ऐसा कृत योगी रेवन सिद्ध, तो केवळ निबद्ध, षोडश मुद्रिका शोभला प्रसिद्ध, महत तो चिद्रूप चिदाकार, सत्कार चित्ती निराकार, जैसे मेघमुखीची गार, पुनः विरे तत्क्षणी. शिवाचार अनादि सिद्ध, तोची प्रकाश वया प्रसिद्ध, अवतरला रेवन सिद्ध, आदि गुरु शिवाचारासी. त्यासी सर्वांगी विभूती भूषण, मस्तकी जटा मुकुट शोभयामान, कंठी हिरवी कथा परिधान, मुनीश्वरासी.